All right. Okay. So since I am the one that is holding up all the production, so uh, and having one of the best production team on this episode tonight, I think it's giving me a little bit of chill. That's why I'm a little bit nervous tonight. But having the three of you here from the Nexus event is amazing. So how was your day, first of all? Okay, it was a better day. We just had some funs today. So there, Gaurav is there in India. So Suhasa is here. We had some funds. We had some plannings for the improvement of our company. Right? And similarly, the day went because currently we are in leave from productions. So currently we are focusing for the growth of the company. Right? Mhm. Okay. Let's mix Hindi and English. Okay, I like the Okay, conversation okay, to be sure. back and forth. तो हिंदी में बात कर सकते हैं आप लोग. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं आपसे कन्वर्सेशन कन्वे कर सकूं. सबसे पहले आप लोग का फिर से स्वागत है. मैं हिंदी से फिर से बोलूंगी जो those people are watching. So, Okay. No. okay, let's go. And let's introduce ourselves. One after the other. So. Who wants to start? Who wants to go first? I think the Suhas? owner should go first, right? The CEO should go Suhas? first. Okay, so hello guys, it's me Suhas from Nexus Events. I am currently the CTO, Chief Technical Officer, and one of the founders, Nexus Events. Mm-hmm. That's me. Let's pass. Okay. That's a pass. ओके ओके सभी को नमस्कार मैं हूँ साजन आप लोग मुझे बोल सकते हो साजुल ठीक है तो मैं हूँ नेक्सस इवेंट एंड आईटी सॉल्यूशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ दैट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू Hello, guys. I'm God of Death. I'm from Nexus Events, and I'm the music producer in Nexus Events. And I do take care of the management as well. Okay. Thank you. So I love your setup. Like even before the BDS, I was saying मुझे आपका setup बहुत ही पसंद है. My Hindi is so right now. Fire, boy, That is fire. okay. You guys have your real name. You have Sajan, Suhash, and God. I know God, the in-game name, but I'm sure you are so much into gaming world. मुझे पता है कि आप लोगों का भी एक गेमिंग नाम होगा ना. So can you tell us about that as well? Let's get to know about you a little bit more. ओके गणदेव का तो जीओडी हो गया ठीक है हाँ और कुछ एक गणदेव छुपा रुस्तम हो तुम कुछ और नाम हो सकता है अंदर अंदर वो भी बता दो Arey, nahi, bhai. I don't have such a thing. Like, I actually like God of Death is Guys, named in Tibetan mythology. Okay, guys, it's all about Lord Yama. So I just kept it like uh, guys, God of guys, Death. give me a minute. Nine. Yes, yes. The echo is coming in stream. One Okay, just I think it's from inform. my end. Yeah. क्या करना है बोल दो सर. Okay. I guess it's good. Okay. Okay. Let's continue. अरे Let's continue. अरे बोल दिया भाई मैंने. once Oh more shit. Oh, once more. Oh, okay. once more कुछ सुना Then नहीं God of Death is a name which is actually taken from a Tibetan mythology, right? Since I'm a Buddhist and I'm partial Tibetan, I took this name as like Lord Yama, who is actually the god of death in Tibetan. Like unko, like I translated it to English as and kept it like God of Death. Okay, about me, actually, I had my own name, right? Sajan, Sojino. Next or Sojino is my currently in-game nickname. For each and every games, like front tag NEX रखता हूँ मैं Nexus का ठीक है NEX मतलब Nexus. तो इसके बाद का जो आता है सजिनो साजन जो ये सब कुछ मेरा निकनेम जो कि मैंने चैट जीपीटी से डिराइव किया था. Yeah. Okay, so my real name is also Suhas, and my in-game name is also Suhas. So everything is real of me. So that's it.
Okay. But I guess you should start this. यहाँ गलत अरे से स्टार्ट single है, करेंगे 100% single भाई. हम तो सबसे हाई के ऑर्डर पे लास्ट पे आएंगे पहले तो गलत देना आएगा सबसे आगे सिंगल में ही हो ना. सबसे ज्यादा सिंगल तुम हो हाँ? कितना परसेंट भाई, कितना परसेंट सिंगल? ये तो तुमको मालूम होगा और सुहास भाई अरे वो everyone is single. वन आवर Let's not start this pen right now, है ना? ऑब्वियसली मोबाइल लेजेंड और पबजी बीजीएम इधर तो पबजी बोलते हैं ठीक है तो मोबाइल लेजेंड पबजी हम जब देखो सब गेम ट्राई करते हैं ठीक है करेंटली हमारा फेवरेट गेम हो रहा है GTA 5 बाद में जब दूसरा गेम आएगा तो दूसरा गेम फेवरेट होगा तो ये चलता रहेगा हम लोगों का अरे भाई मैंने तो सुना था आपका फेवरेट गेम फ्री फायर है. कभी कुछ साल पहले था ठीक है तो जब दूसरा गेम आया दूसरा फेवरेट होते होते चला जाता है ठीक है अभी GTA 5 खेल रहे हैं बाद में दूसरा गेम आएगा दूसरा गेम भी ट्राई करेंगे वही फेवरेट होगा कुछ वैसे ही सीन अभी तक हो रहा है हमारा For me, I play everything. I usually play Tekken and Mortal Kombat. I'm not much into MOBA games though. Same goes for me. I also like story mode games. Battle royals. It's been too much. So yeah. Yep. Yeah, yes, you're right. Exactly. Yeah. Tag also. So we had a customized jersey, ठीक है? तो हमारा खुद का कस्टमाइज जर्सी है जो कि एक हम लोग का पहचान होता है ना कभी भी कुछ स्लैंग इवेंट पे जाते हैं और बाई रोड कभी किधर मार्केट पे चल जाते हैं तो कुछ आइडेंटिटी होगा ना हमारा भी एक हिसाब से बोले तो हमारा आइडेंटिटी खुद का और दूसरा होगा कभी बाहर चले जाएंगे मार्केटिंग भी होगा ठीक है जर्सी देखेंगे तो लोग भी समझ जाएंगे ना इसका जर्सी है Yeah. Okay, conscious of me. You can go on. Okay, so basically, from past 6 years, we are onto the field of esports, and it was 4 years before. There were four of us friends: Suhash, then me, and there was our own friend Rocha Wasti. Is known by the name of Adam Knox in the Free Fire community. Then we had our friend Safal Bartola. So we are the four friends who are currently engaged in Free Fire community before. Then we met each other. Then Safal met Safal. I met Safal. Then Safal introduced me Suhas, Rochak. Then we became friends. And currently it was around I think December 2022, 2022 or 2021. It was December 23. Then we started in a messenger group chat
starting an event management company here in Nepal. Then we started. So December 23, we made a plan. We choose a name, and then we choose a designer. So our friend, there was one of our closest friend who was a graphic designer. Then we told him to prepare logo for Yeti Nepal management. Then we planned it. So it was New Year, January 1st. Then we are planning to announce it on December 25th, the day we planned, next day. So once we thought the new year is coming, so it would be happier for us to also to announce in the new year. So, and in January 2022, we announced Yeti Nepal Management as official and event management company in Nepal. Then for 1 year, we run our event management company, managing some of the online tournaments. Then when it comes to the year 2023, as we are going for some local projects, governmental projects. So the policy is that when working with the government, we need a registered company. Then we started planning. Okay, with 4 board members before we have started to plan. We started okay in the past. तो क्या हुआ हम लोगों ने प्लान किया कि कंपनी को नेपाल पे रजिस्टर करेंगे ऑफिशियली. So we hired a lawyer and we started for every process. But when we had some name check and the trademark check, so we found some copyright issues in the name of Yeti Nepal Management. Then, because although that we stopped our registration process for half a month, then we again planned as number of government projects were increasing for us, not only in esports, furthermore other projects too were we handling. So the topic was we were forced to register a company after 6 months too. Then we had a meet. There is no sound in stream. Yes. Nine. It's like the voice from your desktop audio is coming to us, and your voice is also not going to stream. Can you check that, please? Because I don't want it to be echoing. That's why. I don't know why is this problem arising, but let's check. Okay, is it better now? Is it my voice? Guys, don't mind me, okay? Because I am also I am everything at the moment. I'm the host, I'm the streamer, I'm the production team, so don't mind me. Okay, no problem. It's okay. It's okay. Okay, thank you for telling me though. I think that is why I think you guys are known for the best production. That's why something happened. Gotta fix that. Oh, it's you guys are living up to your name. I hope it's better now, guys. Let me just check too. It's better now? Okay. Yeah. Plus, Yeah, it's better now. Okay, better. Okay, that's great. Anyway, so yes, you were saying that you started with just Okay, WhatsApp, तो ठीक है. right? ओके तो ठीक है, मैं उधर ही था, मैं उधर से कंटिन्यू करता. तो क्या हुआ कि हम लोग व्हाट्सएप कॉल पे बैठे. ठीक है, पहले हम यूज करते थे मैसेंजर, तो थोड़ा प्रोफेशनल होते जाते मैसेंजर से हम लोग व्हाट्सएप पे और लाइव पे शिफ्ट हो गए फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन विद इन आवर टीम मेंबर्स. तो हम प्रॉपरली चल रहे थे. तो प्लान आया कंपनी को रजिस्टर करने. तो फिर से दूसरा लॉयर को हम लोगों ने ढूंढ डाला. तो उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि येती नेपाल मैनेजमेंट नाम तो नहीं हो पा रहा, तो दूसरा नाम पे चल जाएंगे. तो बैठ गए कल पे 2-3 दिन डिस्कस करके एक फाइनल नेम आया, नेक्सस इवेंट. तो क्या था कि सिर्फ हम लोग फोकस करने चाहते थे स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट उस टाइम के लिए. तो दूसरा सोच क्या है कि ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स तो होता ही जाएगा, क्योंकि हम लोग हमारा जो जितना भी टीम मेंबर्स है, ठीक है, करेंटली स्टाफ जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी आईटी बैकग्राउंड के थे. तो क्या सोचा कि हमने इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ क्यों दो कंपनी चला, एक ही कंपनी के साथ इवेंट मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स प्रोडक्शन, और उसके बाद सम आईटी सर्विसेज भी स्टार्ट करेंगे. तो हमने नेम सब कुछ नेम को मर्ज करके किया नेक्सस इवेंट एंड आईटी सॉल्यूशंस. तो उसके बाद लॉयर का हायर किया. एवरी डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो भी होता है इधर का कंपनी रजिस्ट्रेशन का, तो वो सब कुछ कंप्लीट करके स्टार्ट किया 2023 शायद मिड से अराउंड अगस्त था. तो हमने ऑफिशियली नेपाल गवर्नमेंट के जो भी कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसके अंडर
हमारा बिजनेस लाइसेंस ले लिया। तो उसके बाद ऑफिशियली हम लोग अभी के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टाइम आ गया नेपाल का जो भी प्रोडक्शन था, तो प्रोडक्शन और इवेंट मैनेजमेंट, तो वो लोग वो स्टार्ट कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन कर रहे थे। उसके बाद आया इंडिया पे भी थोड़ा प्रेजेंट हो रहा था। उसी टाइम पे गॉड ऑफ डेथ, ठीक है, हमारा सिस्टर, सब लोग हमारे साथ मिल गए, जो भी है। उसके बाद कॉन्टेक्ट होते जाए, इंडिया होते जा रहा था। इंडिया पे भी थोड़ा मार्केट एक्सपांड हो गया हमारा। तो गॉड ऑफ डेथ देख रहा था, सब इंडिया का जो भी हमारा एक्सपांडिंग का बिजनेस होता था, तो वो ओवरऑल सब कुछ दिख रहा था। तो उसके बाद आया इंडिया का 2-3 टॉर्नी प्रोड्यूस किए हम लोगों ने, मैनेज किए। तो उसके बाद आ गया WFA व्हाइट फेदर्स आर्केडिया का टूर्नामेंट। सो उसके बाद जो हुआ कि नेक्स्ट इवेंट का जो हम लोग काम कर रहे थे, हमारा जो मेहनत था 3-4 साल से, तो वो मेहनत को हम लोग ऑफिशियली दिखा पाए व्हाइट फेदर आर्केडिया से। जिसके बाद अभी के लिए टॉर्नी जो भी है आ रहा है, ठीक है, हमारा वैसे ही हम लोग सर्विस दे रहे हैं, क्वालिटी भी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जितना क्वालिटी हमारा 4 साल पहले था, अभी देखिए तो क्वालिटी इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि हमारे पे भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना। तो ये जब सब प्रोसेस नेपाल में हुआ ना, मतलब रजिस्टर्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, सब नेपाल गवर्नमेंट से है। ओके, तो तो क्या है कि बोलो 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 बोलो। नहीं, आप कंटिन्यू करो, फिर उसके बाद मैं हाँ, पूछूंगी। ये तो सिर्फ नेपाल पे किए थे, तो अब टाइम आ रहा है क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे इंडिया पे भी ऑफिशियली चले जाए। तो शायद अब 2-3 महीने बाद इंडिया पे भी ऑफिशियली रजिस्टर्ड करके ब्रांच नेक्स्ट इवेंट का ब्रांच इंडिया पे भी रन करेंगे। तो हो सका तो और भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं हम लोग। प्लानिंग चल रहा है, शायद 2-3 महीने बाद एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा ये सब कुछ। Okay. So how did you you have been मतलब आप मिले सजन से, फिर GOD से, कैसे कोलैबोरेशन में how did it expanded? Because अब मुझे पता है अभी आपकी टीम बहुत बड़ा हो चुका है, मैंने भी देखा था। और आई थिंक जनवरी में, 2 जनवरी में आप लोग ने फर्स्ट ईयर सेलिब्रेट भी किया था। Yeah. तो I saw a lot of pictures where you guys were taking pictures with the members. So could you tell us how did this, मतलब कैसे establish हुआ ये executive members? ओके, तो क्या हुआ कि हम लोग जो भी 4 लोग थे, सुहास में, रोचक, सफल, हम 4 लोग तो 6 साल से फ्रेंड है। तो उसके बाद आया कंपनी का एक्सपांड करने के लिए कुछ आईटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे थे। तो आईटी के लिए भी मेंबर्स चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ का नॉलेज नहीं होता, 4 लोग ही नहीं देख पाएंगे। तो प्लान किया कि कंपनी को जो भी मेंबर्स होंगे वो लोगों को एक्सपांड करने के लिए, तो हमने कुछ कंपनी के लिए हायरिंग प्रोसेस ऑन किया। तो कुछ स्टाफ्स ने हायर किया, तो वो लोगों का इंटरव्यू प्रोसेस सब कुछ सिलेक्ट करके कुछ लोगों को ले लिया। और दूसरा थे हमारे जो भी कनेक्शन पे होते थे, फ्रेंड के फ्रेंड सर्कल पे, हमारे भाई भैया सब कुछ, तो वो लोगों से वो लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते कंपनी पे ले लिया। तो अभी के लिए वो सब लोग कंपनी पे ऑफिशियली एज मेंबर है, ठीक है। तो उसके बाद जब आया कि इंडिया का टॉपिक जो भी है, हम लोगों ने टॉर्नी प्रोड्यूस करते वक्त बीसी पे बैठते थे। तो जब टॉर्नी खत्म होता था, तो बीसी पे बैठ के हम लोग बात मारते थे। तो उसी समय हमारे गॉड ऑफ डेथ भी बीसी पे था। तो उसी बात ठीक है, गॉड ऑफ डेथ से बात हो गया। तो वो लोग, उसने बोला कि ऐसा कुछ सिनारियो है, ये सिनारियो है। तो वो बोला कि वो भी हमारे साथ ऑफिशियली ज्वाइन होकर हम लोगों को सपोर्ट करना चाहता है, हम लोगों के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। तो क्या हुआ कि हम लोग एक बार फिर से जब हमारा लाइव स्ट्रीम खत्म होता था, तो रात 1-2 घंटे कॉल पे बैठते, डिस्कॉर्ड बीसी पे बैठ के हुए बात करते थे। तो बात करते करते हम लोग ज्यादा ही क्लोज हो गए। उसके बाद हम लोग क्या हो गया कि ऑफिशियली गॉड ऑफ डेथ और हमारा चेस्टर और जो भी इंडिया का अभी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए, तो वो लोगों को कंपनी पे ऑफिशियली ले लिए। तो उसके बाद इससे एक्सपांड होता जाए, और जो भी नए बंदे आते हैं, जो भी नए मेंबर हमारे पास ज्वाइन होने चाहते हैं, तो क्या करते थे कि हम किसी को रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं लगाते थे। जो भी कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो हम लोग वो लोगों को बुलाते थे, ठीक है। तो वो लोग क्या चाहते थे सीखने, तो वो लोग को वो अपॉर्चुनिटी दे देते थे। कोई आता था टॉर्नी मैनेजमेंट के लिए, तो उसको जो भी टॉर्नी मैनेजमेंट का हेड स्टाफ है, हेड मैनेजर, तो क्या करते थे कि उसके पास वो बंदे का ग्रुप बनाते थे, और नहीं तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट दे देते थे। तो वो उसको गाइड करता था। तो वही बाद में
जो भी हेड मैनेजर का रोल था, तो वो भी वही कंटिन्यू करके वही लेवल पे पहुंच जाता था। तो अभी के लिए ऐसे ही करते, हम लोगों ने एक्सपैंड करते गए। ये टॉ नहीं देखते थे, कुछ टॉ नहीं देखने के लिए कुछ दूसरा, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए 4-5 लोग ऐसे ही ट्रेन करके हम लोग प्रैक्टिस करते करते ठीक है बसाते गए हमारा। तो ऐसे ही 5-6 लोग अभी के लिए प्रोडक्शन साइड देखते हैं, तो कुछ 5-6 लोग टॉर मैनेजमेंट के, रूम बनाने के, रिजर्व बनाने के, सब कुछ टीम मैनेजमेंट सब कुछ देखते हैं। मार्केटिंग के लिए खुद का एक टीम बना रहा है, जो भी गॉड ऑफ डेथ लीड कर रहा है अभी की टीम मार्केटिंग का, सब कुछ होता है। एंड जो भी टॉर्नी आता है और टॉर्नी को करवाना होता है, कोई भी न्यू टॉर्नी लेना है, तो गॉड ऑफ डेथ बोलता है ये टॉर्नी करा, तो वो बोलता है ठीक है, तो पहले वो स्टार्ट करता है कि ये टॉर्नी करा, तो वो हम लोग को खुश करता है। तो हम लोग वैसे ही प्लान करते हैं, एग्जीक्यूशन करके प्रॉपर एवरीथिंग बजटिंग एंड एवरीथिंग प्रॉपरली करके वैसे प्लान करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से एलाबोरेट किया कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ। आपने ये EWC भी मेंशन किया, because you mentioned EWC, I want to give the mic to GOD there. As I know, I saw the recent post and collab with ZEDI, right? Is that, am I correct? Yes. It's ZEDI. So yes, how is it collaborated? Because I know it's going to represent in the Esports World Cup as well, and it's so prestigious for us to hear that. क्योंकि होता है ना कि many मतलब वो अभी धीरे धीरे टूट रहा है, स्टीरियोटाइप होता है, मतलब पहले स्पोर्ट भी इतना वो नहीं करते थे, they don't uplift much, but now e-sport having its own cup of, like, you know, especially we heard that other categories are being added. So first of all, congratulations for that. Could you elaborate us more how much are you going, can we anticipate from that? Yeah. I think मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा about the Esports World Cup, okay? क्योंकि हम लोग का फुल रोस्टर अभी तक हम लोगों ने रिवील नहीं किया। अभी के लिए like we have like 3 players like जो हम लोगों ने रिवील कर चुके हैं अभी, ठीक है? And one is from USA and he is from like Tekken 8 and other is from Bulgaria, and this guy is gonna play eFootball. And the last one, right now, it's Kevin, okay, and he's going for Street Fighter 6. And like, I think this is the first org like from India, which is actually like participating, like leaving the soul and all. Like, this is gonna be the first org from India. Like, not a big org, but like the org that is actually working properly. Yes. And I think we have around like 5 or 6 categories जिसमें हम लोग जा रहे हैं, and probably like we'll be coming in MLBB scene as well, like after some months, right? Suhash and Sachin, I think we might come, right? Yeah. हम लोग आ रहे हैं ना? Like you don't want to reveal much, but also want to say, but anyway, it's up to them. Yeah, and then like we are working on so many projects right now, okay, and like most probably like Nexus will also be a part of it. Like I'm hoping for that. The Nexus be part of it. So. Yeah, and because like, since like my boys are the best production team in the whole of South Asia, so I have to include them. And like mera ladka, like I look like they were busy till yesterday, no, or else like I just finished production of one international tournament yesterday. और वो अच्छा game तो नहीं था, but it was like Pokemon Unite, okay, and I was doing the production, and like my boys were not there to help me out, and I had to do it alone. Yeah, it's crazy because uneven it's totally depend on the production team. If the production team is good, then the event itself gets elevated. So I think I've seen some of your work, and it is really astonishing that how much you guys have actually put in. For example, like you have done Clash of Titans Season 1 and 2, NEJ Showdown, MLB Bangladesh Series, National Masters, Queen Clash Showdown, Glory Cup, and I can go on and on and on. Like, how did it keep
keep you guys going, because we know esport cup, and not esport cup but esport in general, sometimes it can get so tiring and it can become so toxic. How do you guys survive so many, like even just one or two, I'm like, I'm done with the next one, no more next one. How do you guys will end up doing so many of them? So I think the main answer to this will be that we have to keep faith in everything. As the South Asian market is growing in esports, I would not say that it is fully grown. It's just developing. It's at a developing phase, right? So we have to just keep faith. We have completed one event. After we complete one event, we take break for about 2 to 3 days. Then after, again we get back to the work, saying that yes, one day everything will be good. One day everything will be as the dream that we have dreamt about it. Okay, so that's the faith, that's the courage that keeps us going. That keeps us alive right now in the esports market. So yeah. Yeah, that's true, it's growing, right? But also it's like also a survival of the fittest, because there's so many around. And I was so excited because I've always known Nepal production, they are very good. But having you guys talk, now, it's such a privilege for me to get the direct insight from you guys. And also you have mentioned that in India you are also launching another one, maybe in a month. So how does that look like? How will it operate? Will it be operated from Nepal, or is it somebody from India who's going to operate it? So basically, this will be like some some decisions will be taken from the main headquarters, that is Nepal, right, from our board of directors. But most of the parts will be handled by God of Death from India, Nexus Events. We won't focus that much because as a trustworthy guy, God of Death is there for us every time. So he will be handling most of the events and everything from India. We will be called when the best production is needed, so, to help him. So yeah, that's the current plan. I think all the production is like the best production on the right. Suhash. I think all the production is best. Whatever we get, right? Yeah. Every tourney goes good production for us. Yeah. That's nice. Doesn't depend it doesn't depend either it's small tournament, like a small tournament or high tournament, either it's top notch international tournament, the quality of production will be always same from our side. Is it like, do you guys get funding or as such, or it's just self volunteer, stood up, or like a production team? Okay, so basically regarding this क्या था कि स्टार्टिंग फेज में जो भी हम लोग थे तो प्रोडक्शन के लिए जो भी चाहिए पीसी का सेटअप सब कुछ तो पहले हम क्या करके जो भी हम 4 लोग थे तो हम लोग इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो फैमिली से फंडिंग करके, तो और दूसरा जो भी था हम लोग अनऑफिशियली रजिस्टर्ड होते वक्त जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, हमारे नाम से नहीं कि जो भी पर्सनली कर रहे थे प्रोडक्शन, जो भी पहले सुहास स्टार्ट कर रहा था तो जो भी सुहास प्रोडक्शन कर रहा था तो मैं भी उसी टाइम पे जॉब कर रहा था, तो जो भी हम लोग का पास सेविंग था तो वो उसी को हमने इन्वेस्ट करके पीसी सेटअप किया पहले, तो देन उसके बाद जबकि प्रोडक्शन क्वालिटी इंक्रीज होते गए, जब बड़ा बड़ा प्रोडक्शन आके जो भी हमारे पास इक्विपमेंट था तो हम लोगों को क्या बोलते हैं वो सब कुछ क्या बोलते हैं एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो जो भी हम लोगों के पास इनकम्प्लीट हो रहा था प्रोडक्शन के लिए जो भी सेटअप चाहिए, तो क्या करे कि हम लोग इन्वेस्टर खोज रहे थे जो जिसके पास भी हम लोग पहले वर्क कर रहे थे, तो हमारे पास थे मिंगसो, हु इज वन ऑफ द ओनर ऑफ डार्विन स्पोर्ट्स, तो उसके साथ हमने बात किया, तो उसके बाद उसको एज अ कंपनी पे इन्वेस्टर के रूप पे ले लिया, तो वैसे ही 2-3 इन्वेस्टर को हम लोगों ने कंपनी का एज ए इन्वेस्टर के रूप में दिए, तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के पास से आ गया, तो अभी के लिए जो भी हम लोग टॉर्नी प्रोड्यूस करते हैं उसी के बाद से जो भी आता है हम लोगों को फंडिंग, तो उसी से प्रॉपर मैनेज कर रहे चल रहे हैं अभी के लिए। तो
Is it difficult sometimes though? Because मोस्टली आपका टीम है ना बड़ा, आपका बड़ा टीम है ना, तो कैरी आउट करना। तो कभी कभी क्या डिफिकल्ट होता है कि कुछ कभी के लिए मंथ के लिए भी हम ब्रेक लेते हैं, तो उस टाइम के लिए थोड़ा हार्ड होता है हमारे लिए, ठीक है। तो जो भी हम लोग के लिए कुछ बैकअप तो रखते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम ना कि आगे जाते कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, किसी को नहीं मालूम होता ये सब कुछ। तो क्या कहते हैं कि हम लोग वो सब कुछ बैकअप पे ऑलरेडी रखते हैं, तो कभी भी कुछ वैसे हार्ड सिचुएशन और कंडीशन आ गए तो हम लोग कभी उसी को यूटिलाइज करते हैं। हाँ, ये टीम कंट्रीब्यूशन इज सो इम्पोर्टेंट है ना। एवरी टीम फॉर एवरी ओआरजी, एवरी एनजीओ, आईएनजीओ, एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर के लिए टीम कोऑर्डिनेशन तो बहुत जरूरी होगा ना। मैं ये हमारे यहाँ सीटीओ से पूछना चाहूंगी, बिकॉज वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड है, तो like how do you usually handle all the technical part, like ensuring, because right now also when the podcast was happening, you like I can see your eyes around, you're checking everything. I think you're also very keen eye, मतलब आप मतलब ना छोटे छोटे चीज को भी बहुत अच्छे तरह से अटेंशन देते हो, तो लाइक इवेंट चल रहा होता है तो आपके लाइक हाउ डू यू यूजुअली वांट इट टू गो, लाइक हाउ what are the things that you make sure that it happens before any event start? So some it's महीने में बात होता है, ठीक है। समटाइम्स क्या है कि जो आपका लिखा हुआ था है ना कि what the God writes it happens, मेरा यही मानना है, ठीक है। Because sometimes on some days, no matter how hard we try, no matter how well we are prepared, something goes wrong, ठीक है। अभी तक उतना ज्यादा नहीं हुआ है, but something goes wrong in this technical part. It just depends how fast do you fix it, you know, how fast do you bring it back to the original place. So if you remember in the WFA tournament also, there was a big issue in the production in the English stream when Assassin Dave came, right? That day was the worst day of our production team till now establishment. So yeah, later on after the game 2 it was fixed. So it just depends how fast you fix those problems, right? It does not, you know, sometimes it happens in this technical department. It's like this in South Asia too, we don't get enough net, the problem of electricity is also going on, so there is many things to be considered. So yeah, that's true. So wait, is Prasant from the same team as yours? Yep. Oh, okay, makes sense now. Because for those of you who don't know, they are also the production team for. Everyone knows it. WFA, which just recently happened. They're behind the scene. They are working tirelessly for us to show that amazing a broadcast from the end. So you are based in Nepal. This one I want to ask to the CEO. God of that, I'm coming to you after this. So you're based in Nepal, but your impact is across South Asia, right? So what is being like working with the Indian team? Because I know there's if I'm not wrong, the National Cup is also in your hands, if I'm not wrong. Yes, so it's coming. Yes, so like there are Indian team and org that you have worked with, big or small. Is the esports relation between our region getting stronger? Yeah, obviously there are many relationships with the Indian teams. So basically जब हम स्टार्ट कर रहे थे इंडिया के लिए, तो स्टार्टिंग पे प्रॉब्लम क्या होता था कि हमको हिंदी ज्यादा अच्छे से नहीं आता था, तो स्टार्टिंग पे होता था लैंग्वेज कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता था। तो क्या होता था कि हम लोगों का लैंग्वेज वो लोग प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, तो हमारा और वो लोगों का लैंग्वेज भी हमको मालूम है लेकिन कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। तो थोड़ी बात जब लोग हम वो लोग से काम जो भी हमारा वर्क था स्टार्ट कर रहे थे, तो 3-4 महीने लगा हम लोगों को हिंदी अच्छे से सीखने के लिए। अभी भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी काम चालू होता है तो वो सब कुछ अभी के लिए बोलते हैं। तो हिंदी थोड़ा इम्प्रूव हो गया है पहले से जो भी है। तो उसके बाद हो गया हमारे पास जो भी मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइजर होता था,
ऑर्गेनाइजर टीम जो भी है वो लोगों के साथ जो भी कम्युनिकेशन होता था, तो थोड़े जो भी टाइम के बाद कम्युनिकेशन भी प्रॉपर हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स टीम जो भी प्लेयर का टीम होता है, जो भी सबसे कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रहा था। तो इसी से जो भी रिलेशनशिप बनाना है उसके लिए पहले चाहिए अच्छा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाए, उसके बाद जो भी टीम हमारे सब स्पोर्ट्स टीम, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर, इवन मैनेजमेंट और जो भी इंडियन कम्युनिटी पे वर्क कर रहे हैं स्पोर्ट्स कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए, तो वो लोगों के साथ रिलेशन जो भी है अभी के लिए, और जो पहले था उससे इम्प्रूव होते जा रहा है, जो कि डेली सिनेरियो पे है, तो इम्प्रूव होते जा रहा है बोल सकते हैं। That's nice. What is one of the biggest event that you have done so far? One of the biggest. Currently, one of the biggest event is White Feather Arcadia. Right? Then there was one of the Free Fire जो भी लैन इवेंट था नेपाल पे, नेशनल वर्ल्ड कप सीजन 1, तो वो था। उसके बाद मोबाइल लेजेंड का लैन था इधर 69 MLBB था कप करके, जिसको भी 69 गेमिंग नेपाल ने 69 गेमिंग नेपाल ने ऑर्गेनाइज किया था, तो वो भी एक बिगेस्ट इवेंट है। उसके बाद जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड रिमार्केबल इवेंट है हमारे लिए, ये है कि टेक इंडस्ट्री के लिए एक हैकाथन किया था हमने सीजन 1, ठीक है, जो भी वो किया था इधर नेपाल का कैपिटल सिटी काठमांडू पे, जिधर भी हम लोगों के पास थे 500 पार्टिसिपेंट फॉर सीजन 1, जो भी हैकाथन, उधर हम लोगों ने वो लोगों को सिखाया रिगार्डिंग वेब डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। उसके बाद वैसे ही इवेंट चल रहा था, ये 5-6 मेन इवेंट जो भी बड़ा इवेंट किया, सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से प्रॉपरली प्लानिंग करके इवेंट को कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद हम लोग अभी के लिए 10-15 डेज हो गए, 10-15 डेज भी नहीं ना, 1 week it's already been. Currently we are in a break because we are planning for some more bigger events from our own side, rather than producing. We are planning to organize by ourselves. Oh, that's So nice. current, Is there like an announcement? Soon maybe currently I can give some hints. It's going to be international event soon. Oh, that's a big So tea out there, guys. Currently our team is entirely जो भी हम लोगों के पास जो भी स्टाफ सब लोग है, कम्प्लीटली हम लोग ये इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए प्लानिंग पे दिन रात सब लोग रेडी है, ठीक है। तो मालूम नहीं कब हम इवेंट अनाउंस करेंगे, शायद 1-2 वीक्स पे भी अनाउंस आ सकता है और एक महीने बाद भी अनाउंस आ सकता है। तो जब ये अनाउंस आएगा ना, तो मेरे को भी नहीं मालूम कि आज रात को भी आ सकता है ना, आज रात को भी आ सकता है। अगर हम लोग कभी आफ्टर ये पॉडकास्ट कंप्लीट हो गए तो हमको मालूम नहीं कि हम लोग कब पोस्ट डालेंगे, ठीक है। सब कुछ रेडी है, अब फाइनल बोर्ड मीटिंग बैठ के इवेंट अनाउंस करना ही बाकी है। तो मालूम नहीं कितने को शॉकिंग न्यूज होने वाला है जबकि अनाउंस इवेंट देखेंगे। तो शायद ये हो रहा है कुछ और दूसरा हिंट होने वाला है लैन इवेंट, ठीक है। उससे ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा कौन सा गेम कब, ये कुछ नहीं बोलूंगा। होने वाला है एक इंटरनेशनल इवेंट, वो भी लैन, इतना ही दे सकता हूँ मैं अभी के लिए। Whoa, that's crazy, guys. He's spilling the tea out there. Those who are watching, clip this part, and make sure that you guys go and check their Instagram for the update. I'm sure they will drop a big bomb, and when that big bomb is being dropped, I think God will be the first person to make that noise, right, God? I won't be making the noise this time. I think it's gonna be the Texas event. Yeah, I mean, of course, you like promoting people, so I'm sure you would do. Even if you say that you will not, but I'm sure you'll be the most happy one. That will be, off your seat. Probably like I'll be posting it in Instagram. Yeah. Yeah. I only post it in Instagram. Yeah. You are quite, I think you promote everybody. So I think for Yeah, I sure help for your everyone. own team, I'm sure you would do the same. But let's keep real for a second, okay? Like you guys have been saying, I also had, a few days back, I had some um, guests as well who said they are one of the best production team. I'm not sure if you guys have watched that episode or not, but
let's keep it real. Do you think there's anyone in India, according to you, who is actually has better production quality than your team? God. This. Everyone is good. Everyone is good over here. In India, everyone is working well. सब लोग अच्छे ही है. And like production wise, it's okay. Everyone has good stuff to show. But I think like they just need some more things, I guess. Not in production, but in the music thing, right? Our Nexus event ke paas, I think we have pretty good musicians who can produce like good music. Okay. So I think Nexus event is on the upper hand right now. Yeah. क्योंकि like सब tournaments को theme चाहिए, theme music चाहिए, theme song चाहिए. Okay. And I have been like working in music industry for more than 10 years. So like I'm producing music for them. Like जो भी tournament होता है, I'm doing music for them. So like I think we are on the upper hand right now. Do you even sing, God? I just produce music. Okay. I make music, right? I do sing sometimes. You make music. I mean, I kind of like have this zing that you actually sing well too. So just wanted to make sure that it was correct. Like, do you ever compare yourself with another team, like with the other production? I'm sure there's a lot as well, right? But what do you think that makes Nexus stand out than the others? I think every production has a different way of producing things, right? So what I think is like everyone is doing well. जो Nexus कर रहा है वो और लोग भी कर रहे हैं. जो और लोग कर रहे हैं वो Nexus नहीं कर रहा है. That's the difference. Okay. ये टॉपिक ना मैं सुहास को देना चाहता क्योंकि वो अभी के लिए हमारा सब कुछ जो भी टेक्निकल होता है टेक्निकल रिलेटेड सब कुछ सुहास देख रहा है तो उसी को मैं ये देना चाहता हूँ कि वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या प्लान करते हैं ये सब कुछ जो भी सुहास लीड कर रहा है तो सुहास एक्सप्लेन करेगा तो वो आसान से एक्सप्लेन कर पाएगा तो सुहास. Okay, so as you mentioned, I watched the full episode of the last podcast. We invited someone who also claimed that they are also one of the best production team. So yeah, so I agree. You know, I stalk everyone. Okay, that's because it's our duty, right? We have to see that what others are doing, what are the improvements that they are adding, what are the things that we are missing out, right? So we have to watch everything. You know, it's a market. You know, you choose from the best. So that's the thing. So I watched the full episode. You know, I don't remember that much, but the thing is, right now in India or in any South Asian regions, without API and without the help of client from official, I don't think anyone can beat us in terms of production of Mobile Legends or Mobile Legends. So that's nothing personal, but I feel it that way because we have the best custom HUD, we have the goal difference part, we have the post draft pick part, which is not copied by any YouTubers. Okay, and we also have MVPs and everything that's needed, right? So that's one thing. And right now we are also going to launch something which will help everyone do a good production. Okay, so we'll be dropping our own software for helping other streamers, other small streamers who are casually doing production of esports of Mobile Legends. So yeah, that's the thing. बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग अभी ब्रेक पे बैठ रहे हैं ना तो बैकएंड पे इतना कुछ कुक हो रहा है ठीक है खाना बना रहा है इतना सब कुछ कि जब एक ही बात बनाना चाहेगा हमको भी नहीं मालूम कितना कम्युनिटी पे कितना मार्केट जा रहा है मार्केट चलेगा हमको भी नहीं मालूम इतना सब कुछ कुकिंग हो रहा है ठीक बैकएंड पे तो ये बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत ज्यादा काम ना like maybe he work more than he speak. सुहास जितना हम लोग इधर बोलते हैं सुहास उधर साइलेंट बैठा है तो हमसे ज्यादा जो भी होता है काम ना सुहास का दिमाग चलता है उधर ये ऐसा करो वैसा करो सब कुछ जिधर हम लोगों का दिमाग खत्म हो रहा है उधर सुहास का स्टार्ट होता है दिमाग. Oh, that's nice. I'm sure he's listening. Like you mentioned about like it's
not saying like okay मतलब दूसरा यूट्यूबर का जैसा नहीं है ना. So have you like कभी did you come across, have you ever had your production copy like overlay या graphic या format, like have you seen any tournament doing that? Because for us, because it happens and they don't give credit. So Yeah, so this is something I really don't like. Use it but give credit. No, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? yeah, this has been an incident. I won't tell when, how, what happened, but yeah, this has been an event. While but while we were producing, but while we were producing one of the best tournaments till now, someone copied everything, exact same. Top to bottom, it's all the same. But instead of giving credits, they're coming and telling us that we have good production than yours. So that's the thing. So I guess what makes one of the most important thing that what makes our production in Mobile Legends great is that we don't use any templates, we don't copy anyone's, because if you have seen our production, nothing is copied. Okay, you cannot find any elements, any overlays from any streams worldwide that we have copied from. So everything we made is customized. It's according to the client requires, because I guess South Asia has not seen MVP post draft picks rather than officials. Okay, so I guess you should not, क्या बोलते हैं उसको, एक हिंदी में कहावत है, ठीक है, खुद चोर क्या क्या बोलते हैं, कोतवाल को डांटे. कोई मदद God- करो, कोई मदद कोतवाल को करो. डांटे वाला ना. गौरव बोल दिया भाई. इसको मालूम है ये जो हाँ, मैंने बोला तो चोर कोतवाल को डांटे वाला डायलॉग. तो आई सजेस्ट कि हमारे स्ट्रीम्स अदर स्ट्रीमर्स अदर कंपनीज डोंट कॉपी देम, है ना, क्योंकि some had copied and they had told us कि हमारा स्ट्रीम अच्छा है भाई तुम्हारे से, वो ये वो, तो let it be, dogs bark, that's the thing. अच्छा, ये प्रोडक्शन में भी होता है डॉग बार्क वाला? ये तो obvious. मुझे लगा बस प्लेयर और प्लेयर के बीच में होता है, ये तो प्रोडक्शन में भी डॉग बार्क आ गया. हाँ, होता है. नहीं, क्योंकि I personally have come across like it's not like big big coder, they do coding and stuff, they use the API and somebody copy it and that person is okay as long as they give the credit, but the problem is when they make it their own, है ना, वो लोग जब वो ये मेरा, this is out of my own effort, वो वाला गलत चीज़ है. That's why I wanted to ask this question, because I want to bring up that awareness as well among the community as well. आपने बार बार client के नाम बोला ना, I mean you said according to our clients, so there's a lot of clients involved. This might be a little bit sensitive, but you can dodge the question if you want to, but it'll be great if you can answer. Have you ever come across a client that has stressed you out so much, like a red flag, and why? You don't have to name, but like, So- have you come across? Okay, so we have came across these types of clients frequently, okay, because some as I said, South Asia is a developing region in terms of esports, and many of them don't know the real meaning of esports too, and let alone be the production the ideas of production. So there are many clients, there have been many clients who keep on telling ki bhai, we have to do it like this, we have to do it like this, we have to put it like this. It's for a limit, yeah, we take it as a suggestion, we take it as an improvement for ourselves, right? But after some time our team also gets bored on telling the same thing again and again while we have already implemented that. So I think this is one of the most biggest problem in our service based company. The clients are way too much demanding, way too much irritating. So that's the kind of thing.
That's it. भाई ये बजट में नहीं आता आपका योर सजेशन बजट के अरे बाहर सुहास है मत बोलो ना भाई, वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्शन का काम कुछ नहीं है, सिर्फ वो स्ट्रीम करने वाला डायलॉग भी तो है एक बंदे का. yes yes I've heard How that can you forget that, bro? I've heard that what because I've heard somebody saying why do you have to pay the streamer so much? All they do is just sit in the computer near the computer and go and click that like. That's it. Bro, like it's a lot to do. So sometimes I think that is something that you guys need to talk. If I say it, then it will not be justice. You guys are the real person to talk about it. So could you tell us if you have come across such moment? Yeah, we have came across such moments. Okay, but one simple thing is, again, I'm telling that South Asia isn't growing region, so many of them don't know the real meaning of esports. Many of them don't know the real meaning of stream production. They just think we just open the stream in any of the streaming softwares. Just we hit the start live button and we just start. We just stay there on the screen, but that's not the case. We are adding so many overlays, the background things are running, and so we require at least 3 to 4 PCs that are running, and side by side we have all the members who are sitting in the corresponding PCs also to do the job good. And one more thing, as you mentioned, many of them tell why to pay the streamer more, but if you look closely, streamers are the ones who make the live interesting by adding many elements. If there was no streamers, no overlays, then just the game screen wouldn't look nice. Right? So that's one of my main concerns. And another also is a concern that all the people have to understand that production is also a hard part. It's not easy. It's not just sitting in front of PC, and doing stuffs. We have to prepare everything before starting the live of a tournament. We have to sit there in the PC, like 3 hours before the stream, and we have to test everything, how it goes, how it will go, everything we have to test. So it's not an easy part. Yeah. So when I was having trouble with the the stream, that's how you understood your life. It's okay. Yeah, So streaming is hard. Yeah, streaming is hard. Casual streaming, everything is hard. It takes time to learn. so Sit in front of the computer for hours now, right? Yeah. बहुत hard. बहुत hard, भाई. बहुत hard. Our parents. Yeah, I'm sorry to cut you off, but our parents also tell us that one step ahead generation tells us that you are sitting in front of the PC all day, all long. You are just being there. So sometimes it is fun, but right now our eyes pain. Sometimes we are just irritated. We don't want to see the PCs in front of us. It's like when we finish the events, especially LAN events, when we are sitting there continuously for 10 to 12 hours, when we finish the LAN events, we just close up the PCs, we left it there, and we just go and see the surroundings, like what's going around us. Yeah. So and don't forget, like उसके बाद जैसे तुम्हारा इवेंट खत्म होता है, कॉल करने के लिए मैं वेट कर रहा होता हूँ, और उसके बाद दिमाग चाटता हूँ फिर मैं. ये तो अभी ये तो ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं है. जब हम इवेंट के बीच में होता है तो भी फोन करता है ये, जितना बल इवेंट कर रहे वो भी फोन करते, हंसाता है ये बंदा. जब भी हम टेंशन पे होते कॉल करता है, हंसाता है ये जब भी. और उसके बाद भाई फिर से काम तो कराता हो ना भाई, वही तो है भाई. GOD मुझे कौन सा वाइब दे रहा है अभी, ये मेरा टैरो रीड करेगा अभी. मेरा कौन सा मेरा आज क्या होने वाला है, he's giving me the vibe with all the background and all the colors. तेरा क्या होगा कालिया, राइट? No personal comment on that. वही चल रहा है अभी YouTube का, जो भी मैंने चैट देख रहा था, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नेंजी का वीडियो किधर है.
Uh, तो साइड बाय साइड में देख रहा था स्ट्रीम भी, तो हो रहा था, वो कमेंट पे वो चला है अभी के लिए। नहीं, आपका वो ये स्ट्रीम लाइक समवन इज स्ट्रीमिंग लाइव Okay. एंड उधर पर आपका लिंक भी आ गया है। थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much. Yes. So आपके ओपिनियन में इंडिया लैंड अभी तक आप लोग ने like you did not taste it, right? Yeah. Yes. So what do you want to wonder if you get an opportunity? ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज रेडी, क्योंकि अभी के लिए इंडिया पे जो भी ऑनलाइन बीबी टूर्नामेंट है, तो वो सब कुछ ये है। एक इंडिया का जो भी लैंड होता है बिगेस्ट, वो भी एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि इधर नेपाल का तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो इंडिया का भी एक जो भी इंटरनेशनल लैंड होता है, उसको भी हम लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक बार, कैसा होता है एक इंटरनेशनल लैंड जो भी इसको मैनेज करके प्रोड्यूस करने के एक्सपीरियंस, जो भी टेस्ट होता है, वो टेस्ट को हम लोग एक बार चाहना चाहता है। अच्छा, ये मतलब नेपाल में भी ई स्पोर्ट का सीन कैसा है, like you know compared to India, is it doing better or could you tell us a little bit more so that we can get encouraged to pursue more? तो जो भी ये स्पोर्ट्स का सिनारियो है नेपाल पे, तो जो भी दिख रहे हैं अभी के लिए, जो भी डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि बैक टू बैक टॉर्नीज आ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी ऑथोराइज दे दिया है स्पोर्ट्स की। एक जो भी गवर्नमेंट के अंदर पे स्पोर्ट्स काउंसिल होता है, वैसे एक स्पोर्ट्स काउंसिल को भी ऑथोराइज कर दिया है गवर्नमेंट में। तो जितना भी कॉलेज होता है, कॉलेज पे भी टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, लाइक जितना भी हमारा जो भी दूसरा एक्सेप्ट हमारा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो भी होता है, ये हमारा एजुकेशन ट्यूशन सेंटर्स, उसके बाद जो भी ये कंसल्टेंसीज होता है, इंस्टीट्यूट्स, तो वो लोग भी अभी टॉर्नीज दे रहा है। ठीक है, कितना देखे तो अभी के लिए 5-6 लैंड टॉर्नी चल रहा है इधर नेपाल पे कॉलेज लेवल के लिए। तो ये स्पोर्ट्स का जो भी सिनारियो है, ये ग्रो बाय ग्रो हो रहा है। तो जब स्पोर्ट्स सिनारियो ग्रो हो रहा है, तो स्पॉन्सर्स को भी पिच करना आसान होगा ना। पहले क्या होता था कि जब हम स्पॉन्सर्स के पास चले जाते थे, तो वो लोगों को कैसे बताना पड़ता था कि ई स्पोर्ट्स का ई से लास्ट यस जो भी टर्म है, तो उतने पे क्या होता है, ईच एंड एवरी टर्म ई एस पी ओ आर टी एस ऐसे बोल के सब टर्म को पांच ही बोल के सेपरेट एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो अभी जितना भी, क्योंकि बैक टू बैक टॉर्नीज आ रहा है, टॉर्नीज प्रोड्यूस हो रही है, तो मार्केट पे भी लोग देख रहे हैं ना। तो क्या हो रहा है कि अभी के लिए जो भी हम लोग एज स्पॉन्सर्स और जो भी दूसरे न्यू बंदे बैठते हैं, तो ई स्पोर्ट्स के बारे में जो भी होता है, वो लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आसान हो रहा है। क्योंकि पहले तो स्पोर्ट्स बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन जो स्पोर्ट्स के आगे हम लोग ई थप देंगे टर्म ना, तो वो लोग सोच रहे होंगे, वो लोग टाइम लगा सोचने की ये क्या बोल रहा है, ई स्पोर्ट्स बोल रहा है, स्पोर्ट्स मालूम था, ई स्पोर्ट्स नहीं मालूम था। तो अब बोलेंगे ई स्पोर्ट्स बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे। अगर ई स्पोर्ट्स टर्म नहीं समझे, तो वो लोगों का हम, जबकि गेम का नाम लाइक पबजी, मोबाइल लेजेंड, एमएलबी बोल के, फ्री फायर, ये फुटबॉल, जितना भी गेम का नाम लेंगे वो समझ जाएंगे, नहीं तो ई स्पोर्ट्स टर्म भी समझ रहा है। तो ये से ही ग्रो हो रहा है अभी के लिए, देख सकते हैं तो ई स्पोर्ट्स का सिनेरियो। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी नेपाल में मिल रहा है ना वो। हाँ, दिस इज समथिंग like maybe for like other category इंडिया में मोबाइल लेजेंड का स्पेसिफिकली अभी तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट है, तो थोड़ा मुश्किल है हमारे ये इंडिया में। तो सो टू establish that in India, according to you, from someone who's watching the scene from the outside, do you think there is a possibility for India to grow? Sorry, I didn't get you. I'm so sorry. So my question is like, seeing from like someone from an international scene to India, like नेपाल का भी तो गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इंडिया में तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है ना अभी तक। मेरी अदर कैटेगरी का है, लेकिन स्पेसिफिकली इन मोबाइल लेजेंड नो सपोर्ट, एंड इट्स वेरी, आई डोंट नो, इट्स देयर, वी डू हैव द unofficial name and stuff like that, but legally गो थ्रू करना बहुत मुश्किल है। तो इंडिया में आपको लगता है कि हमारे पास स्कोप है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन टीम ऑर्ग है इंडिया में। डू यू थिंक वी हैव पोटेंशियल?
to grow, or I do you think think there's a the possibility? Indian players do have potential again. पर इधर पर प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि everyone is going on pulling everyone's leg, right? Like कोई Yes. टूर्नामेंट हो रहा है तो दूसरा और के साथ like दूसरा टूर्नामेंट सपोज मेरा और आपका टूर्नामेंट साथ में हो रहा है and like if मेरा टीम आपका आपका टूर्नामेंट में भी खेल रहा है मेरा टूर्नामेंट में भी खेल रहा है they don't actually want to like talk with the organizers and like fix the timings and all वो ego problem जो है like between the organizers over here उसके वजह से I don't think like the people like are gonna grow like too much जितना grow करना चाहिए because we have like very good players in India जैसे Yes. like LCF का error हो गया Yes. like everyone knows error right like LCF का Stark हो गया Fusion Prime में है Frank the Tank है जैसे पहले यामा Esports में वो था like there are so many good players अभी इंडिया में but like this guy is तो ये लड़का लोग को जो है like they are not getting like enough opportunities in India right now since the tournament scene is also going like very bad right now like अच्छा tournament नहीं आ रहा है पहले तो एटलीस्ट छोटा टूर्नामेंट्स होता था आजकल like छोटा टूर्नामेंट्स भी नहीं है for them to play so I like जब तक like इसका कुछ solution नहीं मिलेगा it's very hard for the players अभी के लिए तो जब तक like tournaments नहीं आएगा like the teams are not gonna improve जैसे like अभी ABM में ABM used to play so nicely like अभी कुछ issues की वजह से ABM is not playing like I do watch Apex को live देख I watch him live Radium is not playing Radium को नहीं देखा उसका live में like there are so many good people ना like जैसे Apex और Radium हो गया one of my favorite players India में It's so sad since you brought it up. It's so disheartening to see a good team that have actually represented us for so long getting disbanded because of one incident, no? And then बस player ने उनके खुद के life में इतना ज़्यादा trolling. I think it's too much that I don't think anybody deserve that. And मतलब इधर पर देखा ना like players are not respecting the other players fellow players like जब तक like everyone used to watch them and उन लोग को idol बोलते थे like right, they used to idolize them right और all of a sudden एक ही रात में like they started getting that hate तो अच्छा नहीं है ना Exactly. I think this is something as a community पता नहीं नेपाल का कैसे scene है like how is the competition is it heated up is it competitive नेपाल का scene में like everyone like goes for the competition but everyone respects each other over there that's the best part उधर का कोई भी टीम जो दूसरा टीम को रेस्पेक्ट करता है like जो गेम में हो गया like it is for like 30 minutes 35 minutes में rivalry होता है उसके बाद सब कुछ खत्म है ना और इधर पर like they still trash talk they still make videos that's very bad yeah that is something that we it's like मेरा personal opinion है I feel it that way no I also this is something I think as a player we really need to have a sportsmanship है ना yes sportsmanship होना चाहिए मतलब okay I'm a good player doesn't mean that I have ego I have to be humble too right and it's the same for like I am like this so eventually because of his character he will respect the other player as well so like हम लोग का जो क्या as an org or as a production team how we can just portray the players ना हम उनको force तो नहीं कर सकते so like बहुत ज़्यादा clashes होता है I think in India also I think there are possibility but for me I am going to honestly I am starting to lose hope but anyway let's finger crossed may my word not become true but yeah it's anyway coming back to Nexus have you ever been because we're talking about a little bit of the pessimistic side have you ever been blamed or like ऐसा हुआ है कि तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा नहीं था इसलिए थोड़ा ये गलती हो गया ऐसे कभी हुआ है किसी क्लाइंट के साथ like relationship clashes हुआ है कभी this has far till now not happened with us so let's hope it does not happen either in the future also yeah if you had to have like a slogan okay because you said so far everything is smooth if you have a slogan what would that be
or do I you guess have a team slogan? I guess we have a slogan. Okay, but in my opinion, in my words, I think for the best events, you have to come to Nexus. The best production for the best event management, you have to come to the production. You know, you can take it as a slogan. Yeah. So yeah, If okay, you guys talk about marketing, right? So Yeah. I'm because people do watch the podcast, like they come back and watch. So if they have to, because they knowing that you guys are a big production pack for with a full package, if you have to, do an advertisement about Nexus, how would that be in 1 minute? Come on, God, get ready, No, I Suhash. think like God, I God will think be like explaining this. Sajal is gonna do like that. Sajal is like very good in doing marketing. No? Dan Lima, okay. Sajal, I Nexus. think we can do this. Let's go, Sajal. Let's go. Bro. Okay. I prefer God of it, okay? But Okay. I would like definitely give this project to 9 for advertisement. Me? So, okay. तो एक बार क्या फिर रिपीट कर सकते क्या नैन जी? एक मिनट में like नेक्सस को वो कर दो, प्रमोशन कर दो. ओके, तो हमारा मेन स्लोगन जो भी है कंपनी का, तो वो क्या है कि पावरिंग इवेंट्स टर्निंग प्लान्स इनटू एक्सपीरियंस, ठीक है? जो भी हम लोग इवेंट को प्रॉपर्ली पावर करते हैं, तो जो भी हम लोगों का प्लानिंग होता है उसको एक अच्छा सा क्लाइंट को जो भी एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, जितना भी जैसा भी क्लाइंट आ जाए, तो वो सबको वो जैसा हम क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है उससे कुछ ज्यादा हम लोग देना चाहते हैं, लाइक ठीक है, रिक्वायरमेंट से भी अच्छा क्या होगा क्लाइंट को एक्सप्लेन करके, तो उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस, अच्छा सा एक्सपीरियंस क्लाइंट को दे सकते हैं. तो मार्केटिंग जितना भी होगा, हम लोग सिर्फ ई स्पोर्ट्स का मार्केटिंग नहीं देखते, ठीक है? तो जो जितना भी मार्केटिंग का क्लाइंट आता है, आइदर डिजिटल मार्केटिंग होगा या फिजिकल मार्केटिंग, जितना भी होता है, हम लोग प्रॉपर्ली क्लाइंट, कोई क्लाइंट आते हैं कि वो बोलते हैं कि सिर्फ ई स्पोर्ट्स का टॉन मार्केटिंग करना है सोशल मीडिया के पास से, तो हम क्या करते हैं कि क्लाइंट को कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस करवाने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग तो अपने प्लेस भी होगा, ठीक है? तो किसी क्लाइंट का होता है ना लैंड इवेंट, तो हम लोग क्या होगा, जो हमारे पास तो अच्छा सा टीम है, लाइक डिस्ट्रिक्ट से कोई भी नियर डिस्ट्रिक्ट का टीम होती, तो फिजिकल मार्केटिंग भी करवा देते हैं. तो इससे क्या होगा कि कुछ ज्यादा टीम्स अच्छा Sajan, I think you did not understand Nine's question. Nine's question, Nine's question was, how would you promote Nexus event in 1 minute, under 1 minute? मतलब Under 1 आपको minute. कोई क्लाइंट है ना, आपका भी कोई क्लाइंट देख रहा है, तो आपको एडवर्टाइज करना है कि आप लोग का प्रोडक्शन ही यूज करना है ऐसे. कैसे बोलूं अभी? वो स्टार्टिंग में ड्रॉ में आ गया है. तो क्या बोल सकते हैं कि आप लोग नीजर्स को चूज कर सकते हैं, तो आपको एक प्रॉपर क्वालिटी तो मिलेगा ही, और उससे क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों को एक अच्छा सा एक्सपीरियंस, कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने भी मिलेगा हमारे पास से. मेरे पास से तो इतना ही बोल सकता हूँ. दूसरा सुहास, गॉड ऑफ डेथ, ये लोग भी सीधा बोल देना कहना भाई, like if you want the best quality, like you want to choose us, okay, if you want a whack quality, go for others. Straight बोल दो भाई. नहीं करना चाहिए, मैं तो सीधा बोल दूंगा, क्योंकि like he's being humble, no God. yeah, this guy is humble, like जितना भी like people like I talk in the same way, okay, like जो भी like tournaments के साथ, like people who contact me, I tell them straight, like whenever like they ask me about our prices and all, मैं सीधा बोल देता हूँ, like if you want to choose someone else, like it's fine, like we don't have any issues, but like कितना जगह मैंने like budget is nothing for us, like if they even don't pay us anything, we will still work for them, okay, like just the thing is like मेरा टीम को जो रेस्पेक्ट चाहिए, आई जस्ट वांट दैट फ्रॉम देम, क्योंकि जो भी बात करते हैं ना, दे थिंक लाइक दे कैन ब्रिंग एनी मैनेजमेंट टीम, दे कैन ब्रिंग एनी स्ट्रीमर्स ओवर हियर एंड लाइक लेट देम वर्क. या वो ये होता है ना, लाइक अभी लाइक some hours ago, like a guy texted me in Instagram about the tournament again, and they wanted to us to work, बस सीधा like he was like abusive way में like वो बात कर रहा था मेरे साथ, ठीक है, and
मेरे को दिमाग खराब हो गया यार मेरे उसको पूछा like how much can you take? Okay, he was like 50,000. Okay, look for a new streamer हो गया सीधा. humble होना चाहिए ना this guy not humble enough right now. Like if you want the best production like कराने के लिए so money doesn't matter over there like you just like you need to be humble and like talk properly, give some respect. Not make up like That's true. That's true. Sometimes I feel like people do take advantage of your goodness too. No, yes, how long can you be good, right? You can be yeah. good till one point of time. मक्खन लगाते जाएगा तो फिसल जाएगा ना पानी. So it's better to sometimes just you know to take a pause on there. So what if someone wants to work with your production crew or learn from you? How can they start? If they're like, oh, I want to join Nexus because you guys said India में आ रहा है. So no, India जैसे नहीं doesn't शायद guys रात are भर not like campaigning. उन लोग को जगा रहना चाहिए ना सुहास they have to stay all night long in Discord. Yeah. It's like it's Since like there no, it's like if you want to work with the best company, you have to be the best in one field. You know, we cannot take a rookie and make him climb all the way up. He has to get some knowledge on his own. Which field is he going to come? To work in the best, you have to be the best. It's that simple. And yeah, if efforts is one thing. We also pay well, okay. Even though the board of directors are, not don't have anything to eat or sleep, we pay well to our staffs because I according think to I'll their be first one to apply then. so send my salary sir send 1 lakh when you are board of director, you don't get salary. You should send to okay. sir send me one monitor sir जो बंदा 4-5 मॉनिटर लगा के बैठा है वो वाला है कि मॉनिटर दीजिए. But अरे yeah, सर मेरे of को course, taking serious note in my statement, when we will open our own branch in India, we will require some streamers, graphics art, GFX artists, VFX artists for us. So yeah, either we will approach them, or yeah, if anyone approaches us with a good portfolio, of course, they will be the first one entering into Nexus India. First come, first yeah I think serve. we do need some streamers in India. Yeah. For example, GOD. I'm learning how to stream though but I can manage. I Well, cannot stream MLBB tournaments like उसमें ज्यादा काम होता है like I don't have enough of time to do that क्योंकि मेरा music production में like it's gonna take a lot of time for me. Yeah. So streaming में I give up. yeah, I mean, you have said a lot about this thing. Like, it's so important for one of the you have the upper hand is one of the reason is you always come with the music, right? Yes. So you have what's coming next? You have a project coming up. So are you also working with the music for that particular? Whenever the event happen, are you also in charge of the music production there? Yes, most of the tournaments they give the music production as well to us, right? I talk to the client what kind of music they want. Like some of them listen to metal, some of them listen to gent, and some are like they listen to hip hop and like a different kind of music. So I usually talk to them and start producing music. Like if they want some hip hop tracks, like rap element and all, like I talk to my friends like who are in US, UK and all. Like they are some like pretty good rappers. Like I talk to them, they give their track to me. I start working on it. And if it's like metal, global metal, right? Like I do it myself, like the whole stuffing thing from the scratch to the end. Yeah. So if those who are listening, guys, they are full on package. Grab the opportunity. It's coming to India as well. And before we wrap it up, there are a few more questions that I want to really ask. What make a good production team according to you? Because yeah, you have a bunch and have to full of handful of helps. So आप लोग को क्या लगता है good production team होने के लिए क्या जरूरत है?
In What my I think point is of like first and foremost is brains. okay, in my point of view, I guess there should be a good team, and every team member must learn, must know that they have to improve themselves. You can't be the same that you are in the past years. You have to keep updating yourself. You have to keep discovering new. You have to keep updating everything. So I guess this is what makes a good production team. Okay. That's इनके साथ सामान भी होना चाहिए शायद, है ना भाई? रात भर जागने की क्षमता होना चाहिए. ये तो होना चाहिए, जब जो भी हमारे पास आता है ये तो होना चाहिए बोलती है. मालूम नहीं सुबह का 4-5 कितना टाइम क्या होगा मालूम नहीं होता हम लोगों को जब हम रात पे बैठते हैं. तो जब टाइम देखेंगे सुबह का 5-6 बज रहा है तो हम सोने चलते हैं वो टाइम पे कभी जब सूरज उगता है तब हम सोने जाते हैं. तो तब आँख बंद होता है. हाँ, तब आँख बंद होना चाहिए. So those who want to apply, those are the criteria. If Yes. you are late, एवरीडे अप्लाई नहीं हो, एवरीडे अप्लाई तो नहीं होगा, कभी बोले ना. तो कभी कुछ न्यू ट्राई करने जाते हैं तो रात भर बैठते हैं हम. ये तो कभी हम लोग का जो भी प्रोडक्शन पे होता है कुछ न्यू टॉपिक इंक्लूड करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं रात भर कॉल पे बैठते उसी को इम्प्लीमेंट करके बैठेंगे रात भर जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा सोने का नहीं. यही बोलते हैं हम सब. आप लोग भूल गए क्या 59 का लैन का वो म्यूजिक जब मुझे काम करना था ना, मैं कितना दिन नहीं सोया, दिन भर रात भर बैठकर बनाया था वो. Oh, really? तो कुछ भी I think I didn't sleep for 5 days to complete the track. कुछ भी न्यू टॉपिक आता है ना एडिंग के लिए प्रोडक्शन पे तो वो टाइम के लिए नहीं सोते हम. नहीं सोते. What about your health? Like how for that रात नहीं सोते. मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है इसके मतलब. Yeah, देखे तो. So the thing is, family support is a thing to dwell in South Asian homes. You know that well. Okay, it's an Asian home after all. We have our own boot camp, so there are no parents, no anyone. So And I stay alone. Yeah. So it's easy. Whereas in home, like just now, and right now in home, okay, now my parents will come and shout, "You don't have to have dinner." That and that, it's Asian family, so Asian families don't understand too much about these things. No offense, but it's the truth. तो क्या होता था कि पहले जब हम लोगों ने बूट कैंप स्टार्ट नहीं किया था तो हम लोग हमारा जो भी घर पे बैठ के स्ट्रीम करते थे तो एक बंदा उधर एक अपने घर पे बैठ के फाइनल स्ट्रीम कर रहा होता था तो दूसरा बंदा क्या होता था उसके घर से जो भी गेम का फीड होता था तो वो इंटरनेट के थ्रू मेन स्ट्रीमर को प्रोवाइड करता था. तो ऐसे करके स्लोली बूट कैंप हमने स्टार्ट किया. तो फैमिली पे क्या होता था कि पहले तो वो लोगों को भी समझ नहीं आता था ना ई स्पोर्ट्स मतलब. तो अभी के लिए तो वो समझ रहा है. तो पहले क्या होता था कि वो लोग हमको डांटते थे क्योंकि हम लोग जब स्ट्रीम करने बैठते थे तो शाम का 5 से टाइम होता था तो रात का 12-1 बजे तक स्ट्रीम होता था नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक कभी. तो वो सीन भी क्या होता था कि हम लोगों का जो भी डिनर होता था तो वो हम मिस करते थे तो फैमिली से डांट पड़ता था. तो लेटर ऑन जब हो गया कि हम लोगों का जो भी होगा तो फैमिली को समझाए हम लोगों ने कि ऐसा होता है ये काम कर रहे हैं तो वो हमको डांटते थे कि एजुकेशन तुम्हारा जो भी एजुकेशन का है वो भी देख लो क्योंकि तुम लोग दिन रात इसे गेम पे फोकस करोगे तो एजुकेशन इश्यूज भी होता था. तो फैमिली को कन्विंस किया हम लोगों ने कि एजुकेशन अपार्ट एजुकेशन को भी हम जैसा है अभी के लिए वैसे ही चलने देते हैं, अच्छे से करेंगे एजुकेशन भी. और जो अपना इधर का हम लोगों ने करियर बनाने का ठान लिया है तो जो भी प्रोडक्शन पे ब्रॉडकास्टिंग का नॉट ओनली स्पोर्ट्स एज स्पोर्ट्स और एनी टाइप ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट्स पे हम लोगों ने एक मोटिव बना के इसी पे फोकस करने का करियर सोचा था. तो फैमिली को कन्विंस किया कि इसी पे करियर बनाना है यही फील्ड पे जाना है. तो जब फैमिली समझे तो उसके बाद हम जब ग्रेजुएट हो गए ठीक है बैचलर से एंड +2 से ग्रेजुएट हो गए सब टीम्स तो बूट कैंप को रन करने के सोचे. तो इधर नेपाल के कैपिटल सिटी पे आके एक बूट कैंप
खरीद कर, ठीक है, हाउस खरीद कर, तो इधर बूट कैंप चला रहे हैं हम अभी के लिए। तो जो भी जितना भी प्रोडक्शन का काम होता है सब कुछ इधर बूट कैंप पे बैठ के कर रहे हैं। तो कभी कभी देख रहे हो तो खाने का टाइम होता है रात का 2-3 बजे खाना खाते हैं हम, तो सुबह उठ के खाना खाए वो इतना ही होता है। क्योंकि अभी के लिए तो हम एक सेपरेटली बैठ के क्योंकि हम बूट कैंप पे होंगे तो फैमिली को भी डिस्टर्ब नहीं होगा ना, क्योंकि घर पे बैठ के रात भर साउट करेंगे तो फैमिली को भी डिस्टर्ब होता था कभी कभी। तो वो भी एक रीजन होता था कि फैमिली हम लोगों को साउट करती थी, क्योंकि जो भी हमारा नेबर्स होते थे वो लोगों की भी डिस्टर्ब होगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन के टाइम पे कभी भी कास्टर को कॉल देना होता था तो हमारा बंदे लोगों को फीड कॉल और कुछ दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर पे जो भी डाटा होता था तो वो अपडेट करने के लिए जो भी कॉल देना होता था, कभी कभी हम चिल्लाते थे, ठीक, बहुत लाउड आवाज पे साउट कॉल देते थे तो वो लोगों को। तो उससे क्या होता था कि नेबर्स को भी डिस्टर्ब होगा तो फैमिली को भी डिस्टर्ब होगा ना। तो उसके बाद कभी कभी डांट मिलता था फैमिली से। बाद में फैमिली का सपोर्ट आना चालू हो गया तो वो लोग बोल रहे थे काम करो लेकिन हेल्थ को भी फोकस करो। तो स्लोली स्लोली बूट कैंप स्टार्ट किया, अभी बूट कैंप पे बैठ रहे हैं, हेल्थ का भी फोकस है, ठीक है। कोई बंदा इधर प्रोडक्शन पे बैठेंगे तो एक बंदा जाएगा वो लोग खाना बनाएगा उधर। तो जब हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम तो ऑफ कैमरा काम कर रहे हैं ना, तो उसी वक्त हम एक बंदा उठ के जाएगा क्योंकि हम लोगों के पास तो सिर्फ एक ही बंदा नहीं होगा ना कि जो भी स्पेसिफिक टास्क करेगा। तो देखा जाए तो प्रोडक्शन पे भी सुहास है, प्रोडक्शन जो भी डायरेक्शन होगा प्रोडक्शन का तो वो कर रहा होता है। तो ऑफ स्ट्रीम जब भी नॉन स्टॉप स्ट्रीम करना होता है 5-6-7-8 आवर्स का, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी गेम टाइम होता है तो उसी टाइम पे जो भी को प्रोड्यूसर होता है तो उसको हैंड ओवर करके खाना खा के 15 मिनट्स ब्रेक लेके फिर वापस आ जाते हैं। तो इसे सब हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं। तो अच्छा क्या होगा कि एक प्रोडक्शन प्रॉपर्ली जो भी कंपनी होगा ना प्रॉपर रन करने के लिए नॉन स्टॉप 15 आवर्स काम करने के लिए उसी टाइम पे कोई एक बैकअप पे लिए होगा तो थोड़ी टाइम के लिए भी वो हैंडल कर सकता है ना। इससे क्या होगा कि हम लोग खाना प्रॉपर से खा पाएंगे, थोड़ा टाइम ऑफिस में बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं ना। टीम वर्क ना। भाई पर खाना क्या खाते हो रात को? 2 बजे का 2 बजे क्या खाते हो? खाना बनाते हो वही खाते हैं भाई बोल दो तुम्हारा रोज का खाना मुझे बोलते हो ना, तो मैं खाना खाना चाह रहा हूँ रात को। कभी कभी नूडल्स बनाते खाते हैं रात को, ये कभी जो कभी भी नहीं से होता है भाई। काम चलता है भाई वो नहीं तो You guys are really have each other back for it, right? It's fun to see. I'm sure मतलब आप तीनों के अलावा बहुत ज़्यादा बड़ा टीम है आपके जो बैकअप कर रहा है मतलब आपके टीम को। लेकिन without the pillar, like जो आप लोग हो, without the pillar it cannot move forward. So a big hats off to all of you, and thank you so much for your contribution as well. और कुछ there's मतलब आप लोग ने तो थोड़ा बोल दिया कि लैंड है, कुछ है, थोड़ा चीज फिल कर दिया, और कुछ है बिग अनाउंसमेंट करने के लिए आप लोगों एक ये हम लोग हमारा जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होता है, ऑफिशियल वेबसाइट वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं थोड़ी दिनों में, शायद 4-5 डेज में। पहले ये अनाउंस आएगा, वेबसाइट अनाउंस आएगा, तो वेबसाइट जब अनाउंस आएगा उसका 10-15 डेज के बाद जो भी हम लोगों ने बोला था लैंड इवेंट उसका भी अनाउंस शायद आ जाएगा। जब गॉड डेट बोलेगा तभी अनाउंस करेंगे हम। अच्छा, तो एवरीथिंग मैं तो बोल ही दूंगा भाई, मैं तो तुम लोग को बोल ही दूंगा। आ रहा है बैक टू बैक 2-3 अनाउंसमेंट आ रहा है। जब भी अनाउंसमेंट स्टार्ट होगा ना, like it's gonna be back to back announcements, like no one will get time to figure it out what's happening. I'm so glad you guys came before that because you guys will be so occupied. I'm so glad you guys made it. Thank you so much, Jyoti, for making it happen, though, because I know it's going to be big, and everyone is anticipating for it as well. And it has been a very unforgettable moment for me because you said something about about the payment of the streamer. You talk something very sensitive about the community as well, even the launching of Nexus event in India, and also many other things. So what would be the highlight for me in this particular podcast? What is your dedication? जो रात में आपने बोला ना 2 बजे को जाके खाना खाते हो,
I think, and you having to have the boot camp in your own house and you're taking out your time. I think this is that is why I enjoy doing this podcast so much and calling people who work behind the scene because वो scene में तो कोई नहीं देखता ना, सबको तो वो लोग तो बस comment में मारना होता है, production this, production that, but they don't know what's going behind, right? So I really appreciate that you guys came and told us your struggles as well. A grown up man getting, मतलब इतना बड़ा हो चुका है, एक बड़ा बंदा हो चुका है, and then मम्मी पापा से डांट खाना it like after getting so old also, and that also for a game and something that you love doing. It's no joke. That means you guys are serious about it. So thank you so much for your effort. Is there any last thing that you want to say to the community? I have some words and let's end it. So the main thing is, do not copy others. You have to be creative on your own. Don't copy others, and and tell the owners that it's not good. First thing is that. Second thing is that we support every streamer. We support everyone because we know the we know the struggles becoming a streamer. So we are also launching our own software for that to make small streamers making the streaming easy of esports in Mobile. And last but not the least, we will also be launching an international LAN event very soon. That's it. I guess that's Which month, sir? Any dates, like any month fixed? most probably it will be अभी जून है, जुलाई, अगस्त, शायद अगस्त सितंबर 2 मंथ में, 1 मंथ पे हो, नहीं 2 मंथ कभी अनाउंसमेंट आ सकता है, ठीक है? तो आज जून 21 हो गया, शायद जून 1 पे भी आ जाएगा, नहीं तो जून 25 पे भी आ सकता है अनाउंसमेंट, मालूम नहीं है कब आएगा, लेकिन मैंने अनाउंस कर दिया तो वो आ गया तब तो। मैंने इंडिया में कुछ अनाउंस कर दिया तो वो आ गया ना, या क्या है? कुछ ऐसा मैंने इंडियन प्लेयर्स के लिए कुछ अनाउंस कर दिया तो कुछ जाने वाले, जो खेलने वाले, वैसे होगा शायद ना भाई? शायद वैसा ही होगा, अनाउंसमेंट आएगा ना, थोड़ी दिनों में अनाउंसमेंट आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ में GOD और Sajan, like something, you guys have something to announce, and then the CEO is like, okay. he's too humble, this guy. He's humble in front of camera. In front of the camera, okay. ये भी हो सकता है, ठीक है? ये भी हो सकता है। What about you? इसको चाय पीने का है। Sorry. Any last thing before we wrap it up? Okay, तो before हम ये जो लाइव पॉडकास्ट है, तो before we will be wrapping up this, पहले तो मैं निंजेदा को स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ कि उसने हम लोगों के पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, जिससे भी हम लोगों का भी थोड़ा जो भी है फेस जो भी है, लोग बिहाइंड द सीन क्या होता था हमारा, किसे हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, वो सब जो भी हमारा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं अभी के लिए वो जान पाए। तो उसके बाद हमारा जो भी प्लानिंग एंड एजुकेशन हो रहा है, कुछ कम्युनिटी के लिए अच्छा करना चाहते हैं हम लोग, ये सब कुछ हिंट तो दे दिया हमने पॉडकास्ट के थ्रू, तो बाद में अनाउंसमेंट आएगा तो ये शायद कम्युनिटी को एक दूसरा रूप दे देगा, ठीक है? जो भी ये हम अनाउंस करने वाले, तो मैं क्या सबको बोलना चाहता हूँ कि कम्युनिटी से अच्छे से सपोर्ट आएगा तो हमको भी जो भी हम लोग इवेंट करवाना चाहते हैं, इधर इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, इधर नेपाल, इंडिया और कुछ भी नेशन हो, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सबका सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग इवेंट करवा के हमको भी कुछ नहीं मिलेगा ना। कम्युनिटी का सपोर्ट होगा तो सीजन 1 से हम कम्युनिटी के पास से अच्छे से सपोर्ट आएगा तो सीजन 2 के लिए भी हम सोच सकते हैं ना, क्योंकि जब कम्युनिटी हमको गुड रेस्पॉन्स देगा, गुड सपोर्ट देगा,
तो हमको भी क्या होगा कि कम्युनिटी के पास से ऐसा सपोर्ट आया है, तो क्यों नहीं सीजन 2 के लिए चले जाए, तो ऐसा होगा। तो सब लोग जो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं अभी सिनारी पे, बाद पे भी सपोर्ट करेंगे, फ्यूचर पे भी, और जो लोग भी हमारे सपोर्टिंग हैंड्स पे, सब लोगों को मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ, स्पेशली गौरवदेत, ठीक है। तो जिसने भी हम लोगों को एक कंपनी का न्यू फेस बोल सकते हैं गौरवदेत को, जिसने भी हमारा जो भी नेक्सस इवेंट का ब्रांड है, इसको इंडिया पे कुछ मार्केट दिला पाए हम गौरवदेत की वजह से। एंड चेस्टर जो भी हमारा कंपनी का एक वन ऑफ दी मेन बैकबोन है, वो भी सिलीगुड़ी से है, ठीक। ये जो लोग भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं बैक एंड पे, सब लोगों को मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ। आगामी दिन पे भी ऐसे ही सपोर्ट आते जाए। और एट द लास्ट क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा लास्ट नोट क्या होगा कि जितने भी लोग हमारे पास नेक्सस इवेंट पे एफिलिएट होना चाहते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे से एक्सपीरियंस हो, आपका 10 साल 50 साल एक्सपीरियंस हो, इससे हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपका हम देखते हैं डेडिकेशन कैसा है आपका। अगर आपको कुछ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। अगर आपका मान लो एग्जांपल देता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो आपको आपके पास नॉलेज तो होगा सॉफ्टवेयर का, तो आपको हम क्या होता है, हमारा जो भी है डिजाइनर है उसी के साथ पे काम करवाते हैं, तो क्या होगा कि उसको भी एक एक्सपीरियंस लेना मिलेगा ना, चांस। तो सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सपीरियंस होगा और नॉट एक्सपीरियंस होगा, सबके लिए ओपन है हमारे नेक्सस इवेंट। तो जब हम इंडिया पे ऑफिशियली लॉन्च करेंगे उसके बाद तो अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएगा ऑब्वियसली। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ साजन। GOD, anything for the end? I think Sajuwal have told everything. उसने सब कुछ बोल ही दिया है। I think like what we need is like अभी जो casters, like there are so many casters, like good casters like working in India, जैसे SM भाई हो गया, और क्या बोलते हैं like Shinryu, Miko, and so many other casters like Jay and all, उन लोग को और ज्यादा opportunities मिले, मैं तो वही सोचता हूँ। Like these guys are the best in the scene, and I hope like they will be casting international tournaments and all. Like we are actually working to provide more things for the team, like जो भी Indian casters है, like जो भी काम कर रहे हैं, so that they can explore more places, and उन लोग का promotion अच्छा हो, उन लोग तो वही कर रहे हैं अभी, and I hope like hopefully we'll succeed in that for the Indian community as well as like Nepal community. Yes, for sure. Yeah, there's a famous quote that say good production is invisible. I think you guys really portray that. You guys there is like so many production that you have played with, that you have collaborated with, and I think you have pulled up the curtain to show just how vital that invisible effort really is, by waking up till 2 to 4 in the morning, and working relentlessly for 4 to 5 days without sleeping. I think it's a big W to the team. And thank you once again for coming to this podcast, and to Sajan, Suhash, and God. You sharing your stories and your struggles and your blueprints of what's coming ahead. I think South Asian esports wouldn't be the same without you guys. So thank you so much for your effort, and to all the viewers, make sure that you go and follow their Instagram and also their social as well. They are going to drop a bomb, whether you are watching right now or if you're going to watch later. Make sure that you go ahead and support them as well, and do not forget to like and comment about in the comment section, whether you have done it or not, and we'll keep shining the spotlight to the legend like this every week. This has been 9 in episode 23 with the Nexus event. See you next time. So it's